Har Har Mahadev Ji Mitra, welcome back to Life with Singh, and we welcome back to the Becoming Arjun Challenge as well, my friends. So, okay, this week I have to come a little bit clean to you guys. If you're keeping focus on the videos, you can also see that I have actually genuinely lost strength. Not even a joke. I've genuinely lost strength during this challenge. I'm not even gonna lie. Is there any much difference in my body structure? As in, not really. There isn't much. अभी भी leanness थोड़ी सी आई है, ज़्यादा नहीं आई है. I am pretty much the same weight. मेरा weight अभी ऊपर नीचे गया नहीं है. And I have actually, the only difference is I have lost strength, but I have gained flexibility, काफ़ी ज़्यादा endurance in terms of my stamina wise. There are certain stances that you have to do during calorie practice, which has actually increased a lot, जो काफ़ी ज़्यादा time तक बढ़ गए हैं. I think this is the harsh reality that मुझे face करनी ही पड़ेगी कि अगर मेरे को martial arts continue करके रखना है, I need to be okay with the fact of not having the same amount of strength that I had जब मैं सिर्फ लिफ्ट कर रहा था properly. So एक वो चीज़ है जिसने मेरे को थोड़ा सा खाया है. That is what actually is challenging me right now. Coming to terms, इस चीज़ से terms आने में मेरे को थोड़ा सा time लग रहा है. Other than that, एक और चीज़ notice करी है that I have gotten a bit robotic हो गया हूँ. Like consistency is okay, वो चल रहा है, but उसके बारे में conscious होना भी थोड़ा ज़रूरत है. Like सिर्फ commitment नहीं, conscious भी होना ज़रूरी है. Like you know how mind to muscle जिस तरीके से काम करता है, आपको focus करना पड़ता है उस muscle part पे for it to actually grow. So I think that is something I've lost. I've lost the attentiveness. For जो meditation में एक चीज़ आप एक focus करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, that is something that I believe I have kind of lost. And the next week would be me trying to pin my focus back to the things that I'm doing. उस पे थोड़ा ध्यान देना कि like what is lacking, what improvements can be done. That is a part of life itself. वो आपको हमेशा देखना पड़ता है. एक बार आपके बाद 1 महीना 2 महीने हो चुके हैं kind of. So अब feeling आ रही है, कुछ मुझे पता भी चल रहा है कि क्या चल रहा है मेरे साथ, पैटर्न किस तरीके से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ कि यस आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू. आप न्यू चीज़ ट्राई करते हैं, बट उस न्यू चीज़ को करते करते वो भी एक तरीके से आपका कंफर्ट जोन हो जाता है अगर आप थोड़ा सा और चैलेंजेस ऐड ना करें. इसका मतलब ये नहीं है that you keep on adding challenges and you keep on changing stuff, keep on changing your workout. No, you need to stick with the workout, but you need to still add changes to it. So like workout में you increase either the weight, you increase either the volume, or you can increase in terms of variances, in terms of you like doing isometric, isolateral. You can do drop sets, you can do pre-exhaust, that you can exhaust yourself before you go for your conventional lift. That's also a way to actually go forward. That is also choosing a little bit of more new challenges you keep on adding to it. थोड़ी सी स्ट्रेंज हैवीनेस लग रही थी बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा कुछ ऑफ फील हो रहा था. एंड द सिचुएशन जिस तरीके से जा रही है कुछ सरप्राइजिंग है नहीं. देयर इज अ आई एम टचिंग इट बैक ऑन इट, बट यस देयर इज अ सीज फायर, बट वो कब तक लास्ट करती है हमारे को पता नहीं. सो दैट इज स्टिल ऑन द माइंड. होपफुली इट सॉल्व सून. टर्न्स आउट गुड न्यूज दैट वी आर हियरिंग इज Balochistan is rebelling and has declared itself as a new state, which is how true it is, I don't know, but if it is, that is one tension off our head, and we can focus on growing ourselves and becoming a better nation. That's all I want. अब मैं थोड़ा सा मीनिंग मेरा चेंज हो रहा है अबाउट शस्त्र एंड शास्त्र. वो क्या है वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, बट it is still the same, but it's little different, you can say.
So we are 43 days in, over the almost near the halfway mark, almost. And just if you're still liking what we are doing, just drop a fire in the comments. See you again. Like, subscribe, and share if you're walking this path with me. Thank you guys. Har Har Mahadev. See you around, Mitra.